લઈને આવ્યા હતા રિઝર્વેશન મળી નહીં. કોઈને મળી? કોઈને નથી મળી. તો વ્યવસ્થા તો પછી અધ્યક્ષની થાય, પછી એમના તરફથી કરવી પડશે. મોક્ષનું રિઝર્વેશન આપણે જેને કહીએ સમ્યક દર્શન, તો સમ્યક દર્શનમાં નવકાર મંત્રનો ખૂબ ફાળો થાય છે. ખૂબ ફાળો થાય. કોઈ કહે કે ભાઈ મને કંઈ ખબર નથી પડતી, આ શાસ્ત્ર હું નથી વાંચી શકતી, બીજું મને જ્ઞાન નથી, તો તમને નવકાર મંત્રનું જ્ઞાન છે અને તમે નવકાર મંત્રનું ખાલી જપ કરો છો, બીજું કશું નથી કરતા. સિદ્ધોને નમસ્કાર, અરિહંતોને નમસ્કાર, આચાર્યને નમસ્કાર અને ઉપાધ્યાયને અને સબ બધા સાધુ સાધુને નમસ્કાર કરો છો. એનાથી પેલું છઠ્ઠું શબ્દ શું છે તમને ખબર નથી, 5 જ તમે નવકાર મંત્ર ગણી રહ્યા છો અને એમાં એવા તલ્લીન થઈ ગયા કે તમને એ ખબર નથી કે તમારી બાજુમાં કોણ આવ્યું છે. તો તમે આમ બેસ, તમારા હાથમાં ટિકિટ આવી છે. તો જેને ના મળી હોય તો કોઈ વધારે તમને ટાઈમ ના મળતો હોય, બીજી હોતા હોય તો આ તો ક્યારે પણ કરી શકાય. અને ઘણા લોકો હમણાં કામ પડ્યું મારે અહીંયા લંડનમાં કોઈને વિઝિટ કરીએ ઘરે તો જાણવામાં મળ્યું, તો પૂછ્યું ભાઈ તમે નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરો સવારે? કે હા. કેટલી વાર? કે બસ 2 મિનિટ કરી નાખી. કલાક કેટલા આપણે દિવસના, રાત દિવસના કલાક 24. તો પછી 2 મિનિટમાં 2 મિનિટ કાઢો ને પછીના જેટલો સમય છે બધું તમે કોના માટે કાઢો છો? તમે લાઈનમાં ઊભા હોય ને ટિકિટ લેવા માટે, તો તમે 2 મિનિટમાં તમને ટિકિટ ના મળે, અને સમ્યક દર્શનની ટિકિટ તમને 2 મિનિટમાં મળી જશે. માણસ પોતાને કેટલો છેતરે છે એ જુઓ તમે. તમને એક છે કે હું દુનિયા દુકાનમાં બેસા તો એટલી બીમારી નહીં થતા, મને બી ઓનેસ્ટ, તો ઓનેસ્ટ હશે મારા ખ્યાલમાં, કદાચ ઓનેસ્ટથી કામ ધંધો કરતા હશે. ઇન્ડિયામાં તો ઘણા લોકો બેઈમાની કરી લે ને, પણ આમાં બેઈમાની ના ચાલે. તમને એમ લાગે હું બીજાને છેતરી રહ્યો છું. છેતરે કોને છે? પોતે. પોતાને ભૂલાવામાં, ભૂલ ભવલે મેચ બનેલું હોય ને, પોતાને ભટકાવે. કશું પોતાને દેખાય નહીં અને બીજાને રાસ્તો બતાવવા આપણે જઈએ ને તો એ પણ ભટકે ને આપણે પણ ભટકીએ. તો ધોકો કમસે કમ એ ડિસીવ કોઈના સાથે કરો કે ન કરો, પોતાને માટે તો ન કરો. પોતાની સાથે એક ઘર તો ડાકણ પણ છોડે એમ કહેવામાં આવે છે. વિચેસ હોય ને એ પણ પોતાની માને ના કરડે, એને હેરાન ના કરે. તો આપણે બીજાને પણ રિસીવ કરતા હોય તો પોતાને તો ના કરીએ ને. પોતાની સાથે એ છેતરપિંડી નહીં કરવાની. પોતાની સાથે ઈમાનદારી, એટલે બધી શરૂઆત પોતાની સાથેથી કરવાની હોય. જીવન જીવવાની બધી શરૂઆત પોતાના ઘરેથી કરવાનું. ઘર એટલે પેલા આપણું આ. અને સમ્યક દર્શનમાં તમે નવકાર મંત્ર 2 મિનિટમાં કર્યા તો કઈ નહીં. એક હંમેશા વાણિયાના, મારી બધા વાણિયા જ હશે દુનિયામાં છે ને 2 બુદ્ધિ વધારે પ્રસિદ્ધ છે. તમે સાંભળી હશે, જાટ બુદ્ધિ અને એક વાણિયા બુદ્ધિ. જાટ બુદ્ધિ હોય ને મોટી બુદ્ધિ કહેવાય એને. આ બધા ભરવાડ વગેરે હોય ને, અહીંયા બધા ઇન્ટેલિજન્ટ જ બધા, પણ ત્યાં ઇન્ડિયામાં તો ભરવાડ એટલે આપણે કહીએ ને ભાઈ તું આ શાક, ગોબીનું શાક લઈને આવજે, કોબીજનું, તો પેલો કોબીજનું જ લાવશે, બીજું વધારે નહીં લાવે. અને વાણિયો શું કરશે? શાક લેવા જશે ને તો 3 કામ બીજા કરીને આવશે. આટલો ફરક વાણિયા બુદ્ધિમાં અને જાટ. તો 24 કલાકમાં તમે વિચાર કરો, એક તમને ખાતરી, આ તમે પાક્કું સમજતા હશો મારા ખ્યાલમાં, કે અહીંથી હું જ્યારે જવાનું છું આ દેહને છોડીને, તમારી સાથે કોણ કોણ આવવાના છે? એમ ના કરો એ. આ તો તમે ખોટી વાત કરી. પાપ ને પુણ્ય ના, એમ ના. તમે આખું જીવન કોના માટે જીવો છો? તમારું જીવન કોના માટે? 2 મિનિટની તમને ટાઈમ છે. નવકાર મંત્ર બધો ટાઈમ તમે કોના માટે વાપરો છો? ફેમિલી. હે? તો તમે પછી કે શા માટે એમ બોલો છો કે હું એકલા આત્માન પુણ્ય પાપ જશે? એ ખોટું નહીં બોલવાનું ને. ખોટું નહીં બોલો તમે, સાચું. જેના માટે તમે જીવતા હોય અને પછી તમે જાઓ અને એ તમારો સાથ ના આપે તો આમાં મૂર્ખ કોણ કહેવાય? પોતે કોણ? હું ના કહું કોઈને. હું કહી દઉં તો મને કહેશે બધા, એટલે સમજી આજે અમને મૂર્ખ કહી દીધા, કાલે પછી કોઈ મત તો જોવાના. હું ના કહું મારા મોઢાથી, પણ તમે સમજી લો. સમજાવો છો કે પકડો છો? મને છે ને એક સુવિધા મારે આ થઈ ગઈ કે
અહીંયા લેક્ચરની તૈયારી કરવાની જરૂર નથી કે તમારા લોકો સાથે એટલું સરસ મેટર મને મળી જાય છે ને હા કેમ કે આજે બધા ફાસ્ટ ફૂડ જંક ફૂડ બહુ ખાય છે આ રોટલી શાક ખવડાવીએ ને તો કે ના નથી ભાવતું મને એમ કે અને આપણે બીજા અમને જે પાસ્તા ને પેલું પીઝા ને બધું ખવડાવી તો ખાઈ લેશે થોડું તો મને છે ને આમ અમારે તો એ બનાવવાનું નહીં ને અમને બનાવતા એ બધું આવડે નહીં તો હું શું કરું તમારા બધાના વાઇબ્રેશન થી જે તમને મને જે ખોરાક અહીંયા મળે ને અલગ અલગ એની વાનગી હું બનાવીને તમને આપીશ એ વાનગી બનાવતા મને આવડે છે કે કઈ વાનગી ક્યારે કોની સાથેથી કેવી વાનગી લેવાની કેવી બનાવવાની તો સ્ટફ વગર શું બનાવીશું તો સામગ્રી તો જોઈએ ને તો બધી સામગ્રી મને તમારાથી મળી જાય તમારા બધાના અત્યારે બધાના માઇન્ડ ઓપન છે બધા અને બધાના મનમાં થાય છે કે હું પોતાને રિસીવ કરું છું અને હું પોતે ફૂલિશ છું આ ફૂલિશનેસ નું કામ આપણે નહીં કરવાનું અને જો તમને એવું લાગ્યું હોય કે હું મૂર્ખ છું તો આવી મૂર્ખતા તમે કરતા નહીં એના માટે હું તમને એક સીધો રસ્તો બતાવી છું કે તમારે 24 કલાક છે અને તમે સાધુ નથી તો તમારે જીવવાનું કોને માટે છે પરિવાર માટે જીવવાનું છે તમે એમ ના કહી શકો હું નેગ્લેક્ટ કરી દઈ પરિવારને હવે તો બસ હું મારા માટે એમ ના ચાલે ગૃહસ્થને એટલે સાધુથી મને ઘણી વાર લાગે છે કે ગૃહસ્થ આશ્રમ બહુ કઠિન છે અમારાથી વધારે સાધના તો તમારી છે અમારે તો મને એક જ પ્રકારની સાધના અને તમારે તો પોતાને પણ સંભાળવાના અને ઘરમાં જેટલા હોય એટલા બધાને સંભાળવાના અમારી એ બધી તો પંચાયત નહીં ને ના આગળ કોઈ રોવા વાળું ને પાછળ રોવા વાળું કોઈ નહીં બસ એકલા જેવું જીવવું હોય જીવી લો તમે અને તમારે કેટલે બધા પરેશાન તો તમારું જીવન અઘરું ખરા ને અમારા કરતા બધા હા પડે છે અઘરું છે પણ આ સીધું નથી સંયમનો માર્ગ પણ સીધો નથી ટેઢો છે જ્યારે ભોગથી તમે ત્યાગમાં આવ્યા રાગથી તમે ત્યાગના પંથ પર આવી ગયા તો તમને આ ટિકિટ પાક્કું મળવાનું પાક્કું તો 24 કલાકમાં તમે 1 કલાક પોતાના માટે કાઢી નાખો પાછળ કેટલા રહ્યા અને 1 કલાકમાં પણ 50 મિનિટ સામાયિકની 48 મિનિટ હોય આ સામાયિકનું મંત્ર પકડી લો જ્યારે તમને સુવિધા હોય એક આખા દિવસમાં તમે તમારી આત્મા સાથે રહી શકો તો આત્માને લાગશે કે જે ઘરમાં હું તમે કોઈ પણ મકાન માલિકના કોઈના ભાડુઆતમાં ઘરમાં રહેતા હોય અને તમે મકાન માલિકને તમે સંપર્ક જ ના રાખો તો તમારા સંબંધ કેવા રહે એના સાથે કેવા રહે બેટર ના રહે બીટર થઈ જાય બેટર ના બીટર થઈ જાય બધા હા બરાબર કીધું આવું થાય આપણા આત્માને રહેવાનું ઘર મળ્યું છે આ ઘર શરીર છે ને એ ભાડુતી ઘર છે અને ખાલી કરવું પડશે તો આપણે ભાડુતી ઘરમાં જે રહેતા હોય એનું મકાન માલિકનું થોડું ધ્યાન આપીએ અને આપણે પોતાની સાથે બેસીએ તો એને પણ આનંદ આવશે કે હા મારો માલિક અમને મારી પાસે બેઠો છે ખુશ રહેશે એ પણ ભલે છોકરો બીજા ઘેર રહેતો હોય તો સિસ્ટમ મોટો થયો કે પોતાનું ઘર વસાવ્યું રિલેશનશિપ તમારે કાયમ રાખવા હોય તો મોબાઈલથી ફોન કરો કે ક્યારેક તમે જઈ આવો ક્યારેક તમારે ઘરે આવે તો રિલેશનશિપ રહે તમને લાગે કે હા મારો દીકરો જ છે નહીં તો દીકરો પેલો ઠીકરો થઈ જવાનો હા તો ના સંભાળો તો સંમત એમ નથી રહેતા એને બનાવવા માટે પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરવું પડે છે સિમેન્ટેડ હોય તો કઈ વાંધો નથી પાકું જ રહેવાનું છે તો એવા રિલેશનશિપ આત્માની સાથે રાખો 23 કલાક તમે ભૂલી જાઓ બધાના માટે જીવો તમારે જેના માટે જીવવું હોય ઊંઘ હોય તો ઊંઘો ના ઊંઘ હોય તો એના માટે પણ તમે ઉડાડીને પણ તમારે જેના માટે જીવવું છે એના માટે તમે જીવો પણ એક 50 મિનિટનો સમય તમે આત્માને આપો એ 50 મિનિટમાં તમને ક્યારેય ટિકિટ મળી જશે અને એક વાત એ બજો આપણી આ ટિકિટ લોસ્ટ થઈ જાય ને જે તમારી પ્લેનની ટિકિટ લાવેલી છે 20 તારીખે જવાની આજે 20 તારીખ છે આવતા 20 તારીખે તમારી જવાની છે અને કદાચ એ તમારી ટિકિટ લોસ્ટ થઈ ગઈ 19 તારીખે તો એ પણ તમે કોઈ પણ કાર્યવાહીથી તમને ઉપલબ્ધ થઈ શકશે કદાચ તમે કંઈક પણ કરશો મેનેજમેન્ટ એવું મને તો આવડે નહીં પણ મને તમને મળી જશે કદાચ ક્યાંય પણ લેપટોપમાં યા પેલા એમાં સેટિંગ તો હશે જ હે ફોટોકોપી પણ મળી પણ આમાં એવું નથી અને જો એ પણ ના મળ્યું તમને અને તમે ભૂલી ગયા 20 તારીખે જવાનું તમે ભૂલી જ ગયા કે મારે ઇન્ડિયા જવાનું હતું તો
પછી તમે 21 તારીખે પછી જાઓ કે ના ના મારી ટિકિટ મને યાદ નતું રહ્યું, હવે હું 21 તારીખે મને યાદ આવ્યું, હવે હું જઈ શકું, પછી કંઈ ના થાય. તમે થાય ભલે તમારી પાસે એ ટિકિટ છે પણ 21 તારીખે તમે પ્લેનમાં બેસી શકો, પણ આ સમ્યક્તની ટિકિટમાં એવું નથી. આ ટિકિટ એવું છે કે એક જ વાર જો તમારી આત્માની સાથે સમ્યક દર્શનને તમે સ્પર્શી ગયા, સમ્યક દર્શન તમારી આત્મામાં ટચ થઈ ગયું, તો એ પાક્કું થઈ જવાનું કે તમે ક્યારે ને ક્યારે 84 યોનિમાં ભ્રમણ કરતા હોવા છતાં તમે મુક્તિમાં જરૂર જવાના. તમારું રિઝર્વેશન થઈ ગયું છે અને પાછું તમને ટિકિટ મળશે તો તમે આરામથી જઈ શકશો. અર્ધપૂતગલ પરાવર્તન, જીવ ક્યારે ભમતો રહે પણ સમ્યક દર્શન એકવાર આત્માને સ્પર્શી જાય તો એ પાક્કું માર્ક થઈ જાય કે આ જીવ ક્યારે ને ક્યારે મુક્તિમાં જવાનો, આ જીવ ક્યારે અભવી નહીં બનવાનો, એટલું પાક્કું થઈ જાય. એટલે આને રત્ન કહે છે. ચિંતામણી રત્ન કો, કામધેનુ કો, કલ્પવૃક્ષ કો, ગમે તે કો, આની સુરક્ષા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. અને સમ્યક દર્શન હોય ને તો ઘરમાં શાંતિ હોય. જે ઘરમાં સમ્યક્તિ જીવ હોય ને એ ઘરમાં ખૂબ શાંતિ હોય. તમે કહો કે હું ખાલી થોડા એક્ઝામ્પલ તમને બતાવું. ઘણા લોકો કંકાસ કરે છે. સાહેબભાઈ ગુજરાતી ડિફિકલ્ટ नहीं समझ में तो अच्छे है, समझ में अच्छे। अच्छा समय भी बच जावे क्या? बाहर बैठे हैं सर, है बाहर बैठे हैं। हाँ, जाने के- तो मैं एक थोड़ी सा आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि जिस घर में है ना संकितधारी जीव होते हैं उस घर में ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते, लोग शांत रहते हैं, और हो भी जाते ना तो उफनते नहीं है, नाग की तरफ फुफकारते नहीं है, और गांठ बांध के नहीं रहते, वो गांठ नहीं बांधते. बात हो गई, बात गई, रात गई, बात गई, ऐसे कर लेते. सुबह हुई, रात को बातचीत हो गई थी, थोड़ा झगड़ा हो गया था, सुबह उठे एज इट इज बोलने लगे, कैसे हो, बस चाय बाय जो भी बनानी बना के दे दी. कोई नहीं लगाई नहीं कि कल कुछ हुआ था क्या रात को. ये संकित के लक्षण होते हैं हस्बैंड वाइफ में. मेरे को तो वो आइडिया नहीं है, आप लोग जानते हैं कैसे फाइटिंग होती होगी मेरे ख्याल से, आई डोंट नो होती होगी, कैसे होती है आई डोंट नो दिस थिंग, लेकिन मैंने सुना जरूर है, तो कभी कभी देखा भी है. तो ऑफिस से आया, यहाँ तो वो मेरे को इतना समर देखने को नहीं मिला, तो लेकिन इंडिया में पता है मेरे को, जेठ महीना आता है, वैशाख महीना आता है, तो ऊपर वो आकाश तपता है, नीचे धरती तपती है, और काम करता हो तो ये दिमाग सब गर्म ही गर्म हो, तो फिर आप देख लो कैसी हालत. ऐसा एक व्यक्ति जब खाना खाने घर पे गया, खूब सीजन का टाइम होता है तो फटाफट गए, अपनी पत्नी को बोला फटाफट खाना डालो, मेरे को लेट हो रही है. बैठा नहीं, उससे पहले लेट हो रही है. देखिए लोगों की स्टाइल, देखिए जीने की तरीका. बैठा, उन्होंने कहा भी शांति से बैठ तो जाओ. खाना खा रहा था और मूंग की दाल बनाई थी, क्या उड़द की होगी, कई बार उड़द में क्या है, व्हाइट व्हाइट कलर के कंकर निकलते हैं, कभी दिखते कभी नहीं दिखते. और आजकल तो यहाँ तो मेरे ख्याल से आपको वो चुभना ही नहीं पड़ता होगा, टाइम नहीं, और सब इसलिए मैनेजमेंट ऐसा कर दिया है शॉपकीपर ने कि भाई रेडीमेड लाओ और डालो, अंदर कुछ भी हो तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको पक्का है कि ये सब फ्रेश है. तो दाल बनाई थी, अब खाना खा रहे. आप खुद चिंतन कर लो, आप खाना खा रहे हो, ऊपर से तप के आए हो, नीचे से तप के आ रहे हो, दिमाग तप रहा है, और आपकी दाल में कंकर आया है, आपका दिमाग क्या होगा? वो तप गया पूरा ही. उसने कहा अरे भाग्यवान, तेरे भगवान ने दो आंखें दी है, तुम दो कंकर नहीं चुक सकती. तो ये कंकर आए थे, बोल दिया फटाफट. वो कम थोड़ी थी, वो भी फायर थी. हाँ, घर में एक हुए गरम, दूसरो हुए नरम, तो घर में रहे धर्म और शर्म, और दोनों ही हो जावे गरम तो फूट जावे. दो गरम हो गए ना, उस घर का सत्यानाश हो जाए. ये देखिए संकित नहीं होते ना, ये सम्यक दर्शन नहीं आता है ना, तो ऐसे गर्माहट रहती है. वो कम नहीं थी, उसने कहा फिर से बोलना, क्या बोला आपने? तो बोले कह रहे को दो कंकर नहीं चुके दिखे, दो बड़ी बड़ी आंखें दी है. तो बोले तुम मर्द हो मर्द, और भगवान ने तुमको कितने दांत दिए? 32 दांत दिए, और मर्द होके 32 दांतों से दो कंकर नहीं चबा सकते. तो बढ़ेगा झगड़ा, अब वही जाने कैसे सल्टा उनका वो जाने. लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि सम्यक को नहीं जानते,
उनके दिमाग ऐसा हाई प्रेशर में रहता है, न खुद अच्छे से जी सकते न दूसरों को जीने देते, जिंदगी का आनंद ही लॉस्ट हो जाता है। अब आपको पता नहीं ये परिवार कैसा लगा, ये फैमिली यू लाइक और नॉट, आई डोंट नो। और आपको मैंने आपको खाली मैं बता रही हूँ, आपको फैमिली आपको अपनी चॉइस कर लेना। मैंने एक फैमिली का एग्जांपल दिया है। और दूसरे इंदु बहन खाना बना रहे, फलके बना रही, और दिनेश भैया क्या सौभाग भाई खाना खाने के लिए आ गए। तो अपना अपना नेचर होता है। कैसे, मेरे को तो ज्यादा कोई काम पड़ा नहीं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति वाइब्रेशन से अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। खाना खाने बैठे, 2 फलके खा लिए, 3 खा लिए, फिर उन्होंने सोचा भाई ये साथ ही खाना खा लेते हैं तो सब साथ में काम सलट जाएगा, फलके लेके तो बैठ गए, और वो भी बैठ गए खाना खाने। पता नहीं इंदु भाई को पता ही था। उसने जैसे ये कोर खाया, उन्होंने सौभाग भाई का हाथ पकड़ लिया, बोले आप कैसे आदमी हो, 3 फलके खा लिए, अंदर बिल्कुल नमक नहीं डाला, मैं भूल गई सॉल्ट नहीं, ऐसा बोला, ज्यादा सॉल्ट पड़ गया, बोले इतने खारे फलके बन गए, मैंने सॉल्ट अधिक डाल दिया, कम से कम बोल तो देते, कम से इतने खारे हैं, मैं तो क्या देरी लगती है, अभी मैं तो बना लेती, नया आटा गूंद के 4 नए फलके बना लेती, ऐसे खारे क्यों खाए आपने, सॉरी मेरी गलती हो गई। इन्होंने ऐसा बड़े लो वॉइस में, तो उन्होंने कहा नहीं ये गलती तेरी नहीं है, तूने तो फलके ठीक ही बनाए, रोटी तो ठीक ही बनाई है, लेकिन प्रमाण में, नमक के प्रमाण में आटा कम लिया था। है? इसलिए गलती तेरी नहीं है, गलती तो उस आटे की, वो कम आ गया, इसलिए खा लेते। देखो यहाँ भी तो हंगामा हो सकता था ना, क्यों नहीं हुआ, यहाँ भी बड़ा हंगामा हो सकता था, और खाने के समय तो बहुत हो, वहां पे तो पूरा ध्यान अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, क्यों, बोलो कैसी लगी, दोनों फैमिली में से पसंद कौन सी है आपको, इंदु भाई क्या हमारे इनकी फैमिली पसंद, क्यों, इनके कसाई शांत है। सम्यक दर्शन में अपने लक्षण पढ़े थे ना, याद है कि भूल गए, पिछले क्लास के लेक्चर में 5 लक्षण बताए थे कि 5 लक्षण है तो आप मानना मैं सम्यक्ति थी, सम संवेग निवेद अनुकंप आस्तिक्य भूलने के लिए। आज तो मेरे को जल्दी जाना, इसलिए मैं पूरा आपको भी पूछ नहीं रही, मेरे दिमाग मैंने, आप एक कान से सुनिए, 2 कान से मत सुनिएगा, ये सीधा वन वे है, यहाँ से सुना दूसरा, एक कभी डंडी डाल के देखो यहीं से निकलता सीधा निकलता है, एक कान से सुनना ताकि कुछ रहेगा दिमाग में जाएगा। सम कसाई की शांति होना, सम्यक्त्व का पहला लक्षण है, उसके कसाई शांत होते हैं, उफनता नहीं है, गर्मी भी आती है तो उसको समझ में आती है कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे में लोभ चेतना जग रही है, उसको शांत करता है। तो जहां कसाई शांत होते हैं वहां शांति का एटमॉस्फेयर बन जाता है। बहुत बड़ा लाभ है सम्यक दर्शन का। आपने देखा होगा ना, मानसरोवर देखा, मानसरोवर इंडिया में है, फिर भी हंस देखे होंगे आपने कभी, हंस, उनके अगर अंदर चोंच में, मुख में मोती चला जाता है तो पिघल जाता है, पता है आपको, पता है आपको, मेल्ट हो जाता है वो मोती, उसके अंदर मुख में ऐसे रसायन, उसे क्रमिक कुछ ऐसे कोई रसायन होंगे, सिक्रेशन ऐसा होता होगा, वो मेल्ट हो जाता है। वही मोती समुद्र में, सी में कितने सालों, हजारों सालों से पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें गया तो वैसे अपने मोहनीय 8 कर्म है ना, ज्ञानावली दर्शन मोहनीय अंतरा, मोहनीय कर्म की सबसे ज्यादा स्थिति है 70 करोड़ी सागर, इतना बड़ा गणित है जिसको अपन ऐसे कैलकुलेटर से हिसाब किताब नहीं कर सकते। 70 करोड़ी सागर मोहनीय कर्म की स्थिति है, लेकिन सम्यक दर्शन अगर आ गया तो 70 करोड़ी सागर 1 करोड़ी सागर में आ जाएगा। पूरा समुद्र एक पूरा खाबोची इतना छोटा सा पॉन्ड बन जाएगा। कितना फर्क पड़ा, एक पूरा सी और एक पूरा एक तरफ सी, और वही सी एक पॉन्ड में आना, ऐसे पॉन्ड थोड़ा छोटा सा तालाब बन गया, कितना फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, छोटा सा रिवर बन गया, कितना फर्क पड़ गया। वैसे ही हमारे ये जो कर्म होते हैं भव भ्रमण के, ये पूरा ऐसा समुद्र की तरह
लेकिन जब सम्यक दर्शन स्पष्ट होता है तो 70 कूड़ा कुड़ी सागर की स्थिति एक कूड़ा कुड़ी सागर में आ जाती है। इतना फर्क पड़ता है ये इसके आने मात्र से। ये आने के बाद चला भी जाता है। और ज्यादा विश्लेषण तो आज बड़े समझ ही करने वाले हैं। इसके दूषण क्या है, इसकी कैसे मुआवजत की जाती है, इसको कैसे सेफ रखा जाता है, इसकी चर्चा तो मैं नहीं लूंगी क्योंकि बड़े समझ आपको अच्छे से बताएंगे। मैं आपको इतना बता देती हूं कि आपको कुछ आए न आए, आप एक सामायिक का मंत्र पकड़ लीजिएगा। तो एक सामायिक करोगे, कम से कम स्थिर रहोगे, उसमें आप नवकार मंत्र की माला, मेरे ख्याल से कोई है यहाँ पे जो पूरी नवकार मंत्र की माला फेरते हो 108 टाइम्स? 1 2 3 पीछे क्या नाम है? भैरवी। और 2 भाई 3 भाई और बाकी 2 3 बहन बस। नवकार मंत्र का 108 बार क्यों, 107 बार नहीं, 109 बार नहीं, 108 बार क्यों फेरते हो? कभी आपको प्रश्न हुआ इसका? है तो उत्तर मिला आपको? क्वालिटी है। कोई बोलते महाराज हम तो 5 बार बोलते हैं, कोई बोलते हम तो 10 बार भी बोल देते, 1 बार भी बोलते, ऐसे नहीं। स्तुति पूरी अच्छे से होनी चाहिए। अरिहंतों के कितने गुण? 12, सिद्धों के 8, आचार्य के 36 और उपाध्याय के 25 और साधु के 27। सब मिलाओगे तो कितने होंगे? 180। पूरी आराधना होती है और नवकार मंत्र की तो पूरी आराधना करनी चाहिए। भले आप ये सोचो कि इसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम मत जोड़िए, भक्ति के साथ समय नहीं जोड़िएगा। इसलिए आप एक समय लीजिए, आपको कोई समय बार बार देखना नहीं पड़ेगा, उसमें माला का भी होगा, आप स्वाध्याय भी करेंगे। तो इसी स्थिति में क्या है, कभी कभी हमारे भाव इतने बढ़ जाते हैं। आप कभी ट्राई करके देखना, मेडिटेशन की ऐसे बैठ गए, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बैठ गए ऐसे, और कभी कोई बात हो जाए मान लो, आप आवेश मत करिएगा, केवल श्वास देखिए, अपने को देखना शुरू करिए। आपको जो आनंद आएगा, कभी कभी आपको ऐसी फीलिंग भी हुई होगी कि आपके भाव ऐसे अप हो रहे हैं और भाव से ही भव तरा जाता है। जितने आपके भाव बढ़ेंगे आप कहीं के कहीं हो जाएंगे। लेकिन किसको अगर सुधरना ही नहीं है, आई वॉन्ट टू चेंज अदर्स नॉट टू मी। हम क्या चाहते हैं, घर में कई बार आप समझेंगे, अरे मेरे थोड़े हस्बैंड चेंज हो जाए ना तो मेरे घर में शांति आ जाए, मेरी सासू थोड़ी, मेरी बच्चे थोड़े ऐसे ठीक हो जाए ना। अरे अपन सबको ठीक करने में लगे हैं, अपने को ठीक कौन करेगा? प्रवचन हुआ अच्छे से, साधु बोल रहे थे हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, गंगा जमुना सारी तीर्थों की यात्रा करेंगे। लेकिन आप देखिए, कोई भी कैसा जीव हो, चोर भी हो, डाकू भी हो, उसमें भी आत्मा है और उसमें भी कभी कभी अच्छा विचार आता है। तो उस सत्संग में, सत्संग का बड़ा लाभ है, तो उस सत्संग में एक चोर आया था। तो उसने देखा कि साधु भगवंत पाप कर्म के बारे में इतना बता रहे हैं और मेरी आत्मा ने तो कितने बुरे पाप कर्म किए हैं, प्रतिदिन रोज दूसरों की चोरी करता हूं, उससे मेरा जीवन चलता है, मेरा घर चलता है, तो मैंने तो कितने पाप कर्म करे। और पाप किसका बाप नहीं है, और इतना सारा पनिशमेंट मेरे को मिलेगा, तो क्यों नहीं मैं मनुष्य जन्म में हूं अभी, तो मैं कम से कम मेरे पाप कर्म को तोड़ू। ऐसी भावना एक चोर की आत्मा में जगी। सब लोग चले गए तो वो साधु के पास आया, उसने कहा कि महाराज आपने तीर्थ यात्रा घोषित की है, प्लीज मैं आपके साथ आना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम, इतने मैंने पाप किए हैं, मैं चोर हूं, पूरा अपना अच्छा परिचय दे दिया साधु के सामने, कम से कम झूठ नहीं बोला, तो मुझे ले जाओ। संत पहुंचे हुए थे, उसने उसको देखा तो नहीं कर दिया, यू शुड नॉट कम। तो बोले क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। अरे मेरे इतने पाप कर्म हैं, आपके चरणों में नहीं मिटेंगे तो कैसे मिटेंगे? उसने कहा तुम चोरी करते हो, रोज चोरी करते हो, तुम्हारा आदत हो गया, हैबिट हो गया। हैबिट को मिटाना, हैबिट का एक बार बीच में बता दो, क्या स्पेलिंग है? HABIT। हैबिट कोई भी चीज की जल्दी नहीं जाती नहीं। जैसे आप एच का, हैबिट का एच कट कर दो, मतलब वो आदत है अभी। ये क्या सूचन कर रहा है? अबिट, यू हैव दिस। ए को कट करो तो मतलब कुछ, और उसको भी एक के बाद एक लेटर कट करिए, इट माने ये है, और फिर एक को और कट करिए, उल्टी की आदत है।
मतलब कहने का एक सिंबल है ये तो उसने उसको बताया संत ने कि तुम चोरी करते हो और तीर्थ यात्रियों की अगर किसी की चोरी की तुमने वहां पे तो मेरी तीर्थ यात्रा बदनाम हो जाएगी, सो यू शुड नॉट कम। देन ही स्टार्टेड टू वीप, इतना रोया, बोला मैं कसम खाता हूं, आई एम चेकिंग ओथ प्लीज, स्टिल 1 month आई विल नॉट स्टील एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, 1 महीना तक मैं किसकी चोरी नहीं करूंगा। बहुत किया तो संत का मन नहीं था, फिर भी उसकी भावना देखिए उसने लिस्ट में नाम लिखा। अब देखिए जिस दिन यात्रा शुरू हो गई, हमारी आदत क्या है, अगर हमारा संकल्प डिटर्मिनेशन अच्छा है, पॉजिटिव है, आई वांट टू चेंज माई सेल्फ, आई वांट टू चेंज माई दिस हैबिट, then definitely we can change. But if we are not pay attention on particular on habit, then we never change, we never get success. तो चोर की आदत देखिए, 4 दिन हुए, रोज 12 बजे के बाद उठ जाता है, बिस्तर पे बैठता है, अरे उसको याद आया, अरे चोरी नहीं करना, बैठ गया, त्याग है ना। ऐसे करते करते 1 वीक बीत गया, 8वें दिन उसके दिमाग में चिंतन देखिए, ये शैतान का भी है और ये हमारे लिए बुन भी है और हमारे लिए कर्ष भी है। उसके चिंतन में क्या आया, उसने सोचा कि मैं 7 दिन से चोरी नहीं कर रहा हूं, अगर 1 महीने तक मैंने चोरी नहीं की, इसका मतलब कि मैं तो मेरा धंधा ही भूल जाऊंगा, मेरा चौपट ही हो जाएगा, मेरा घर कैसे चलेगा, तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। देन ही थिंक आई कीप ऑन प्रैक्टिस, मेरे को प्रैक्टिस शुरू रखनी चाहिए, बट हाउ, आई कांट स्टील एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। तो दिमाग है मनुष्य का, जितना ये सोचता है उसका उतना कोई नहीं सोचता। उसने एक आइडिया निकाला, I will not steal anything from any bag, just I change 1 to here to there, there to here. ऐसा प्लानिंग किया उसने, फिर रात को उठा तो ऐसा बड़ा फॉल था, इससे भी बड़ा फॉल था। तो यात्रा में तो तीर्थ यात्रा है, एक तरफ लेडीज को स्थान देते थे, एक तरफ जेंट्स के, तो एक तरफ जेंट्स के लगेज था, एक तरफ लेडीज का लगेज। सब लोग सो गए थे, गर्मी के दिन थे, सब लोग बाहर में जाकर के ठंडी हवा में सो रहे थे। इसका आदत था, रोज 12 बजे बाहर उठता, 1-2 बजे अंदर आ गया, वो आके एक बैग खोला जेंट्स की तरफ से, वो पैंट शर्ट वगैरह निकाले, शर्ट ला करके उधर डाला, उधर से ब्लाउज पेटीकोट निकाल के ऐसे करके सब किया। तो उसको तो लेना नहीं था। अरे सोनिए आप, सो क्या वो, आप भी होंगे क्या उसमें। आप देखिए कैसे करता है व्यक्ति, आदत अगर नहीं बदलना है तो ऐसी गलियां निकलती, मैं आपको ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। मैं तो खाली एक एग्जांपल बता रही हूं। सुबह उठा, वो तो सो गया, लेकिन दूसरे लोग उठते ये तीर्थ यात्रा में तो पहले बात लेते, तो सबने कपड़े निकाले, लेडीज ने निकाले, पैंट निकला, शर्ट निकला, जेंट्स निकाले, साड़ी निकली, ब्लाउज, अरे हंगामा हो गया पूरा। ये क्या, Who did? संत के पास गए, बोले महाराज क्या हो गया, यात्रा में बहुत यात्राएं की, ऐसी तो हमने कभी नहीं देखी, ये सब क्या हो रहा है। बिका, I don't know who did this thing. शांति रखो। ऐसे 2-3 दिन हुए, लोग कितना सहन करेंगे। तीसरे दिन लोगों ने सोच लिया हम तो जा रहे हैं, हम यात्रा पूरी नहीं करेंगे, we must be go back. बहुत समझा। संत ने कहा बिना साक्षी, बिना विटनेस, उनको तो पता है संत को कि इसके अलावा कोई और नहीं करेगा, लेकिन ऐसे कैसे कह दे। तो अब संत जगे 34 रात को, 3 रात तो अच्छा हेरा फेरी हो गया, 4थी रात में संत सोए नहीं, वो अपनी आदत के अनुसार भी उठ के आया और ऐसे ही करने लगा। संत अंधेरा था, ऐसे डार्कनेस, संत आए, हाथ पकड़ा उसका, बोले क्या कर रहे, बोले महाराज आप, बोले क्या करे, तुमने कसम खाई थी, बोले मैं कसम, अपने कसम पे हूं, मैंने अपने कसम नहीं तोड़ी है, मैंने कोई चीज नहीं चुराई है। बोले क्या कर रहे, जस्ट प्रैक्टिस। बोले काय की प्रैक्टिस, बोले महाराज मेरा है ना, मैंने सोचा ऐसा कि मेरा धंधा चोरी का है और 1 महीने तक चोरी नहीं करूंगा, फिर परिवार को क्या खिलाऊंगा। तब संत ने कहा, सारी बात सबको बता दिया, सब कर दिया, लेकिन संत ने उसको कहा कि तुम एक चोर थे, तुमको पता था, और तुम तीर्थ यात्रा में आके तुम्हारी आत्मा प्योर हो जाती
अगर तुम ये नहीं सोचते कि 1 महीने के बाद तुमको वापस चोरी करने का, ये नहीं सोचते, तुम्हारा कल्याण हो जाता। तुम जैसी आत्मा को कोई सुधार नहीं सकता, कोई नहीं सुधार सकता। इसलिए मैंने कहा था भगवान तीर्थंकर केवल ज्ञानी, उनके रिश्तेदार जमाली को नहीं सुधार पाए, नहीं सुधार सकते। हम सुधार सकते हैं, वी कैन चेंज अवर सेल्स, हम खुद को ही सुधार सकते हैं। When we pay attention on ourselves, first I have to change myself, then we can change to others. बाहर देखने वाली आंखों को भीतर ऐसे मोड़ो, तब दिखेगा। अपने को मत सोचो हम बच्चे नहीं है। अब बच्चा बाहर ऐसे खड़ा होके भी बैठता है, माँ पूछ रही है क्या कर रहा है इतनी गर्मी में, बोले पसीना सुखा रहा हूं। अरे बुद्धू, पसीना सूखता है क्या? तुम्हारा पापड़ सूखते, मेरा पसीना नहीं सूख सकता? तो उस सन से तो गर्मी से पापड़ सूख सकते हैं, कपड़े सूख सकते हैं, लेकिन पसीना नहीं सूख सकता। क्रिएट होगा वो तो। ऐसी बातें, अपनी मूर्ख भरी बातें हम अपने साथ नहीं करें, अपने को धोखा नहीं दे, क्योंकि ये जीवन बड़ा मूल्यवान है। ये टिकट इसी में मिल सकता है। कभी कभी गुस्सा आए तो चंडकोशी को याद करना। नाम सुना आपने? कौन था? तर गया, कितने लोगों को मारा इसने, कितनों को मारा इसने, कल्याण हो गया। संथारा किया था, आपको ध्यान में आए तो किसी को समझ में आए। 15 दिन का संथारा, एक गाथा आगम की तरह आचार्य महाप्रभु जी ने गाथा लिखी है, जिसमें आगम के ही, खुद के नहीं, आगम के ही उद्धरण है। उसमें ये चंडकोशी का पूरा अच्छा विवरण किया है कि इस चंडकोशी जैसी आत्मा भी, तिर्यंच भी तर गई प्रभु की शरण में जाके। हम मनुष्य होके अपनी गति नहीं करें, वो दुर्गति से उसने सदगति कर ली। कि हम ऐसी नासमझी नहीं करेंगे कि हमारी सदगति होती होती हम दुर्गति में चले जाएं। एक क्रोध में ताकत है कि अपनी गति को वो चेंज कर सकता है। जब वो शांत हो गया तो उसके मन में भी, तिर्यंच में भी स्थिति है, हमारा औदारिक शरीर उसके पास भी है, मिट्टी का शरीर है उसके पास भी है, तो वो भी मुक्ति में डायरेक्ट चाहे तो जा सकते हैं, अगर इतने हलुकर्मी हो जाए। लेकिन संथारा वो भी कर सकते, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, क्योंकि ऐसी चेतना विकसित सब जीव तिर्यंच के नहीं होती। जब वो प्रभु की शरण में आया और उसने, भगवान ने कहा बुझ जाग, तू याद कर, पहले तू तापस में था, मनुष्य योनि को एक क्रोध के कारण मनुष्य योनि बिगाड़ के तुम तिर्यंच में आए, और अभी तिर्यंच में भी तुम जग जाओ ताकि तुम्हारी सदगति हो जाए। एक क्षण ही काफी था उसके लिए, मूल्यवान। लाइफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली 1 मिनट इन विच वी कैन चेंज अवर लाइफ। एक ही क्षण उसको मिला, एक क्षण में उस चंडकोशी को समझ में आ गया, तिर्यंच प्राणी को भगवान की बात समझ में आई, और उसने अपना पूरा लाइफ चेंज कर दिया। उसने क्या किया कि अपना मुंह था वो बिल में डाला, नीचे पूरा शरीर बाहर रखा। क्यों? उसने सोचा मेरी आदत है फुफकारने की, मैंने आज तक यही काम किया, कितने लोगों को मारा, और अभी भी अगर मैं नहीं जगा जैसा कि प्रभु ने कहा, तो मेरी तो दुर्गति और होने वाली है। तो मैं अगर मुंह ऊपर रखूंगा तो फिर और किसी को दसूंगा, तो मुंह नीचे रखा और बाहर। जंगल की चींटियां, उस समय कोई ग्वालिन वहां से जा रही थी, भगवान तो चले गए, संथारा कर लिया इसने, हिला डुला नहीं, पादोपगमन संथारा, वृक्ष की तरह अडोल रहा। कोई ग्वालिन जा रही थी, बोला देव तो नाग देवता है, तो उसने दूध चढ़ा दिया, और आप पता है एकदम प्योर दूध था, मीठा था। तो जंगल की चींटियां इतनी आई कि इसका पूरा शरीर छेद कर लिया, लेकिन उस तिर्यंच प्राणी को 100 साधुवाद उफ तक नहीं किया उसने, एक उफ नहीं किया उसने। इतनी समता, इतनी सहिष्णुता उसने धारण कर ली। 8वें देवलोक में पहुंचा वो, 8वें देवलोक, सारे उसके पाप कर्म का संक्रमण हो गया, सब बदल गए। हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। कभी जीवन में ऐसे क्षण आए तो इस प्राणी को याद करना हमको संबल मिलेगा, क्योंकि ये जीवन बड़ा मूल्यवान है। किसी ने गाया है, आया जो जग में जाएगा एक दिन, हंस के तुम जी लो जीवन का हर
पल का है सफर, कभी रुक जाएगी साथ, किसी को नहीं खबर। यही जिंदगानी है, नहीं तो ये पानी है, नहीं तो ये पानी है, यही जिंदगानी है। आया जो जग में जाएगा एक दिन, हंस के तुम जी लो जीवन का हर एक पल। पल 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 हमारी जिंदगी बीत रही है, बीत रही है, फिर भी हैप्पी डे बर्थडे तो मना के हम खुश हो रहे हैं। होते कि नहीं? लोग विश करते हैं हमको। अरे हमारा 1 साल बढ़ा कि घटा, वो घटा, उसका दुख आपको नहीं हो, इसलिए ऐसा माहौल बनाया जाता है कि सब खुशियों का माहौल बन जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे बड़े स्वामी जी आ गए हैं। आप हैप्पी बर्थडे करते हो। सबको एक बार स्टैंड अप सीटिंग, बिकॉज हम 2 काम करते हैं। थोड़ा सा इनको, हमारे क्या है, 2 काम करते हैं। ऊपर क्लास चलती है एमए वालों की, I bow down to the Vitrag Paramatma Mahavir, Shraddhe Gurudev, respected brothers and sisters. This is second week. We are talking about Samyak Darshan. કેટલો સમ્યક દર્શન તમને ખબર પડ્યું છે? કોઈ બતાશે કે સમની these points we now chewed and digest. Listening tons, then chewing few kilos, assimilate and digest, and make a part maybe 1 or 2 grams. Tons we cannot use, but tons is coming. When there is rain is too much. But if I ask, how much you collected, Sobhag Bhai, or Dinesh Bhai, or Rakesh Bhai, or Rajiv Bhai, or Aksu Bhai, then here you don't need, but in India we used to collect. When there is rain and big buckets and towel and balti and pital, kitten and can, everything keep out, and we pour the rain water, and then we use it. So long time, 10 days, 15 days, because otherwise whole work is manual. Again, water coming from the tanks and putting on the pitcher. It's not like this. Now situation changed, and still we collect rainwater because this is pure water. But whoever have his pot big or small, that was win. That's the limit we can collect. So about Samyak Darshan, we all are listening, we all are talking. But really, what happened when Samyak Darshan? What is its result, output? How we feel that this is Samyak Darshan? Anybody who can tell me? Control your kashaya. Control your kashaya.
have mercy. I think so. What is it? Karuna bhav. Karuna bhav, anukampa bhav. Control your kasai. It's only But I said think- positivity, just and positivity. positivity, yes. But still, we are missing the link. Love. Love for your soul. Love for the soul. Yeah, first step is no. Janana. Starting from, like, it is right, it is wrong. We have to make a clear cut line. Otherwise, we don't know we are in the wrong side or we are on the right side. A small story. It is just Indian situation. Husband is about to take bath, and normally when they used to take bath, a full bucket of water, soap, towel, oil, and pata. So this is bathroom. Not our here bathroom. You have the same. It's very systematic, but normally in India, and that bathroom, wherever he want to sit, like in angan, outside, inside, and they used to take bath. Normally, ladies won't have their separate inside closed bathroom, but gents and children, they used to take bath like this. Now situations are changing. So the one place where nearby the drain, he used to take bath. So his wife took all these things there, and he was just sitting. Before that, she came there and she said, "Oh no, I must not keep the pata and balti and water here." She moved from here to there. Then husband became so angry. "Why you moved this bucket and pata? I used to take bath here only. This is my place." Then she says, "Look, there is a ant hole, and so many ants are here. So I thought I must move." Then husband replied, "These ants born for dying. These ants born for dying. How much ant you can save? Who you are? You are not God." And then he started arguing with his wife. And she said, "Okay, life and death is not in our hand, but whatever we can save, we can save. We should avoid this type of hinsa." So here, can you judge me who is Samyak Drishti, who is Mithya Drishti? Right. Is there any label? She is having a tagma, No. Samyak Drishti and Mithya Drishti. Just her thinking, her awareness, and this awareness, these type of small awareness is making a way towards Samyak Darshan. Because in this world we have two categories, living and non-living. And we are using most of the time non-livings. Sometimes livings also. So living and non-living, there is a big interaction. And in such situation, we cannot freeze our requirement. We cannot stop. We have to eat, we have to drink, and being a householder, you have to bath, and we have to do washing. Even being a monks and nuns, we have to do. So necessity of life, we cannot stop. But a Samyak Drishti Jeev, one who has Samyak Darshan, his perspective is changed. Nearly 15 years ago, in Ladnu, one lady came from Canada.
and she is a research student, like I am here research student, and she is from Canada to Jain Vishwarti about the living tradition of Jainism and ethnographic study of ladies, nuns, mumukshu sisters. So all these her subject to know and read and write and interview. So she was doing that. So one day she was coming and there was like big aunt Makoda. So the big aunt, a line of big aunt was there on the road. And sometime out of rain they come out, sometime very too much heat they come out, because they don't have reasoning mind. Like whatever reasoning mind human being has, they don't have. Even some of them having panchendriya, having 5 senses, but reasoning mind of human being and there is very different. So the aunts were in a line, in a queue, long queue on the black road and black aunts. But she was coming and she was just like we are shaving, we are putting one leg and shaving their life and then moving, we are moving, and we have seen she is coming from in front of us, she is also doing that. So I asked Annie, who told you to save these ants? She said, nobody told me. But it is inside me. I always care for the living being. Even in Canada, when my friends were working on these living beings, I tried to save them. Whenever I became aware of this, my family said, what are you doing? You crazy. You gone mad. But Samani, I can't put my legs on living beings, my foot on living beings. I try to avoid and save their life. So you see, this type of Samyak Darshan, even not Jain, not born in India, not born in Jain family, they are taking from their past life. And this is a kind of Samyak Darshan, where there is Anukampa, Karuna, a feeling of empathy. Oh, how much pain they will have, how much things. Like sometimes people boil like rice, boiling rice and the mand, and that is going in direct in the drain. And you know, drain is full of upkai, vanaspatikai. Where there is upkai, vanaspatikai is niyama, means together. Pani che to vanaspati thase ja thase. But Swamiji, we use hot water from the tap, it goes direct to the drain, then it's the same thing. It's not boiling hot. Yeah. That's boiling. Atta hai, boiling, We yeah. take bath also. Sometimes boiling Hot hot. water. If you can make little bit less, then maybe you can save their life. And if you direct pour, and if you are pouring in the pot and later you so that is save their life. So in every step, and it is depend on our awareness. If we are aware, we can save, and if we are not aware, we cannot save. In India we were doing like that, but here we didn't see any insects. So we just pour in the drain. In India we were pouring in the pot or in But here drains are everywhere. 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 because you don't see There here, also insects comes from then the you car. pour it. And otherwise, like if some drain where always hot water is going on, then it is It's safe safe. side. Safe side, because
there is no insect because this drain is carrying hot water always. Always hot water carrying. It means like someone's kitchen. Whenever twice or thrice they are using this hot water. So maybe not as in India. But my point is that awareness is the key of Samyak Darshan. Acharan Sutra, where there is a small sutra, Uddeso Pasagasanati, one whose eyes is open. Eyes open means our eyes is always open. No. Eyes means not these eyes, but the eyes of Karuna, eyes of Samata is open. Then we feel okay. We understand this situation. One family, and mostly we have the family oriented things. We have our groups. So in groups, if we understand what is weak link of this person, we three people together, one is so powerful that can work in the 4-degree temperature. If 10 guests are there, ladies can cook and serve. But one sister-in-law is so weak, in 99-degree temperature, she said, oh no, my head is heavy, I have this pain, that pain. So and the third one is comparing, one have 3-degree temperature, one has only 99, but in 99, one is not coming out of bed and other is coming. But here, if we have this drishti, if we understand that some people are mentally weak, and mentally weak people are physically sound but nothing. They can't do. So we should not compare in such situation. I want to tell you one real experience. I was in Vijayawada and a phone call came that 100 students from a CA institute want to come for Preksha meditation and relaxation for 2 hours. I said, okay. At that time I had cold, so I said, okay. At night time they gave us cold. So I said, okay, come in the afternoon, 2 to 4. And when I woke up, I said, oh, severe pain in my body. Then we checked, then it is 101 temperature. They give me one kerosene and okay, take rest, and then I feel little better. And when 2 o'clock they came, all 100 students, they were Tamil students, so they don't understand Hindi, they don't understand other, means they understand Tamil or English. So I feel so much pain in my body. And I said, I am not able to go. Then my other Samiji said, let me check your temperature. And she checked. So she said, you have temperature, but not much. It is above 100. So you can go and you can do. I said, okay. So I made up my mind and my strength, and I went. After 1.5 hours, then again I feel, oh, like vomiting sensation, and I can't bear with this. So I said, okay, if send someone and ask someone who can translate them in Telugu or some English, but I can't do much more. Then I came and I checked my temperature, it is 5 degrees. So I asked that Samniji, when you sent me at that time how much it was? Then she told me, look, in our group there was nobody
to speak either Tamil or English. They don't understand. Then who will go? Eh? And they came from so long by a cab and so much management, and they took off. And each and every class of CA student is very costly because they took off from there. So we thought there is no other way. So it was 404 temperature. But even though we thought, okay, take it crossing and let her go. And if we would have been told you before that you have 4-degree temperature, you never made up your mind. So it depends upon the situation and circumstances. At that time, she got this clue and she sent me. Otherwise, if she said, okay, you have 4-degree temperature, even though there is nobody, you have to go, then I said, no, I can't go. But wouldn't the somebody saying मैंने झूठ बोला? That doesn't. No, it is not June. When first I came, I asked why you told me like this. Then said, look, I told 100, you have above 100 temperature. Above 100 is 101, 102, 103, 104, anything. But it is a jute or not? Not jute. Not jute. She says, my intention is that if we tell you the 104, then, and if we tell you that you have no temperature, then it is jute. So we took a safe side that you have above 100. I written, I asked, why you speak like this? Then she said, no, it is not jute, it is not asatya, because we are also be careful about it. So it is in a situation to fight this situation. So sometimes it happens. And if she said, no, you have no temperature, it is wrong. It is true. So she saved herself. Still, Kanti Pragyaji, Prasanna Pragyaji's sister, she has elder sister, she is also a nun. So she was with me. We are together for many years. So still sometimes we remember, we laugh at. So in this situation, like because things like this happen in our life almost every day, and when say something like this happens, and when you know that she told you over 100, in her mind she knows it's 104, and you can misinterpret thinking, oh, it's less. So in my mind, I know when I'm saying something like this that I know I'm lying in a way. Okay, I know that person is going to misinterpret that in some way. So is it still right or wrong to do that? Her intention is like any bad intention. She told me, look, in our group there is no option. Nobody is speaking English. And these students, what shall we do? And there is no interpreter. If she is speaking in Hindi and someone interpreting in the Telugu or English, so there was no chance. So for that situation, she did that. So if you're doing it for a good, then it's okay. Yeah, for good. For not her own benefit, not for any selfish feeling, just to cope up with the situation. But she said over 100, so it's fine. And she said over 100. Yeah. Sometimes when we do karma, we know we're doing karma, but we say to ourselves, I'm going to bear this karma myself. Is it possible? Pardon? Sometimes we know we're doing knowingly, we know we are doing karma. And we say to ourselves, I know I'm doing karma, but whatever fault I'm going to get for the karma, I'm going to bear it myself. Because obviously we have to bear karma is what we do. Yes. But we can say to ourselves that I know I'm doing karma, but I'm going to bear it. Because I know I'm going to get એટલે કે છે કે હું ભોગવી લઈશ હું કરું છું આ કર્મ પણ મારા મનથી એમ કરું છું કે હું ભોગવીશ પણ હું કબૂલ કરું છું કે હું ભોગવીશ. Yeah, you see, like in this situation, like being a householder, or even being any living being, we cannot stop continuously. Out of 8 karma, 7 or 8, we are continuously binding.
either Shubh or Ashubh. But this bondage is continuous, non-stop bondage. And sometimes in some situation, person knows that yes, this is not right, but there is no option, I have to do. So it is also, it is a state of Jagriti. It is a state of Jagriti that person understand that I am binding this girl. So in that you get less karmas? In that situation, if you do it with awareness? It is, I can't give you any evidence, but I can say that where there is Jagriti, then you have less bondage in a, not quantity wise, but not guard bandhan, but sitil bandhan. Intensity. Yeah. Intensity is less. Knowingly if you do. Suppose you don't want to do something, but for Kevli and Rishikesh say, Mom, we like this. And there you say, okay, being a mother, I have to do this. For me, I don't want to do. I can quit from these things. But for the sake of happiness of my kids, I have to do. I have seen several householders, and they said, Samniji, we are in the householder life. So, sometime we want to do some tyag, like being a householder, Brahmacharya Vrat. Some householders say, like in week we are 2 days Brahmacharya Vrat palan karte hain. But without the permission of one spouse, husband, wife, husband, they can't do tyag. Have you know about Vijay Seth, Vijaya Sethani story? Vijay Seth and Vijaya Sethani. Means their engagement was already fixed by the family. So some Muni came. So they are doing lecture on Brahmacharya Vrat. And listening that lecture, as they were so much effective. So Vijaya thought, okay, I must take 15 days the vow of celibacy. 15 days vow of celibacy. And in the line of James, Vijay was also there. So he said, okay, very soon I am going to marry with Vijaya. So full Brahmacharya Vrat I can't do, because without the permission of wife. Because householder have to take permission of their wife. And wife have to take permission of his husband in some vratas, some vows. So Vijay thought, okay, I will keep half days open, means 15 days Brahmacharya Vrat in a month. So I am taking Sukla Paksh, bright 15 days. And she thought, okay, I am keeping 15 days open, so bright, dark 15. So one did Krishna Paks, dark, and other one did Shukla Paks. And now you feel what is the situation? Means Brahmacharya Vrat for whole life. So when they married, then Vijay told that, like, during this Sukla Paks, I am Brahmachari. Then she said, I am Brahmachari for whole life. Then they say, how? That I did half month and you did half month. So now at that situation, Vrat for a householder, they must ask and consult to each other. Sometimes we don't know what is husband's situation, what is wife's situation. And in the same way, being a householder, you have several duties. Like guests are coming, and you have children, and they have their own desire. Something you don't like, but for the sake of the happiness of your family.
So here, if you don't like to do that thing, but just you are doing for the sake of the happiness of family, it means bondage is less. Because you are just performing the duties. अंतरंग न्यारा रहे, जूं धाय खिलावे बाल, जे सम दृष्टि जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरंग न्यारा रहे, जूं धाय खिलावे बाल. Means you are not engrossed, not in deep with all these bondages. Knowingly you are doing, somewhere you are performing your just act. You are doing actions. And we all are players in this world. But if one player don't understand the situation of a player and feel, oh, this is my real life, it means started bondage. The bondage is more deep, more intense. And when you are doing for the sake of just doing, it means there is less bondage, less intensity. To understand the karma theory, we have to understand that the duration of the karma and prakriti of the karma, sthiti of the karma, anubhag of the karma, means they are intense or less intense. One has fever, only 99 degree and very mild fever, and one has 4 degree. Who is under more pain? 4 degree. But at that situation, it means 2 rising state of the karma. Both have vedaniya karma, but one is less, under the less intensity, less anubhag, less bandh, and less duration and mild situation. And the other has. So how much intense your bondage is, the result is coming the intense and severe, more painful. So knowingly if you do something, then result and bondage is totally different. Every day you are chopping sabji sudharana, sabji काटना. मैं सब्जी काटती हूँ, मैं सब्जी सुधारती हूँ. You see, speaking and listening, two different things. And in the same way, if someone say, "Oh, give me that knife," and you are giving knife this way, and or you are giving knife from the handle side, making difference means your awareness, and where there is awareness, less bondage. You are eating, oh, so nice mango sandwich, and like me, nobody makes slice. I can make so nice. Nobody is good in making such things. So again and again, you engross in that situation. And one, yes, I'm making nice. My family life, my husband life, my kids life, I'm making for their fulfillment of the desire. Being a mother, this is my duty. But if you start saying, oh, nobody can make like me, nobody is hand like me, nobody is making vagar like me, dokla like me, it's only I. It means you are finding more karma. If someone is samyak drishti, his speaking is changed, his walking is changed, his talking is changed, his perspective is changed. Like wearing clothes, we feel, okay, going in pravachan, we are also wearing nice, whatever we have. Going to someone's house, whatever we have, we also use nice. We don't say we don't use. But, oh, like me, nobody can. Oh, my
look my queens, how nice crease, and how this, and someone of you, oh Samniji, how nice your crease. Nancy, yes, I'm keeping like this. I'm spending 3 hours in washing. Then I don't use press, but I make so much nicely. I spend half an hour in this. So it means my perspective is not right. My Samyak Darshan is not in its situation, in its place. I am in the stage of Bahiratma. Bahiratma means my soul is more and more material oriented. Means I feel happiness. And if you say, Samyaji, yes, happiness. It looks so bad. But then I'm so sad. It means you are there. There is some outer agencies who are making you happy, sad. You have no decision inside. If they say, oh, it is not so pure white, not so bright. Yes, I'm using since 5 years, 4 years. So this brightness is not. And if I started inside, oh, it is not good, they feel like this. So our perspective, what Acharam Sutra said, one who has Samyak Darshan, Uddeso Pasagassa Nathi, means their eyesight, their viewpoint is totally changed. Means all negativity, where there is negativity, that changing towards the positive. In every situation, you have good, so not so much happy. What point? Because it is due to cloth. You are looking so nice, it is due to skin. You are not looking so nice, you are beautiful and you are not beautiful. These comments, if making us happy and unhappy, it means our Samyak Darshan is not reached in that level. Shimli, how can you keep positive in negative? जब बीमारी आ गई और कुछ natural calamities हो गया, then to keep positivity कि बहुत अच्छा हुआ. How can you keep positivity in a negative situation? And I'm not saying that if natural calamity happens and we say, oh, बहुत अच्छा हुआ. No. ना और कुछ बीमारी आ गई, कुछ कैंसर हो गया, किसी को ऐसा कुछ हो गया कि मेरे को पीड़ा होती है, तो बोला कि how can the person himself with samak drashti keep positivity even with suffering? Yeah, even with suffering. This is like if someone is there and they started blaming this one, that one, situation, family or work or this and this, or due to my boss, he is so bad and I was so under pressure and this happened to me. Blaming others. And where, okay, look, this is the bimari, this is the severe type of bimari, and it is due to my own karma. My own karma. Responsibility is mine. And when we are happy, unhappy, sad, we are always putting all these things on others. I got so much problem because these people are not good. My sister is not good, my mother is not good, my father is not good, my boss is not good. And that's why I got such trouble. And where in Samyak Darshan, Samniji, situations are not good. Not good at home, not good at work. And same time situation of my body is not good. But I tried to find out the way out with samatha. I'm not blaming them, I'm not blaming them. I'm not saying, oh, cancer is good or this is good. This is not positivity. Somewhere way out is
but somewhere way out is samata. Means just making a balance, not criticizing, not condemning others. If we start condemning, we can do it. It's easy way, very easy way. Just one student in our university, and recently she got cancer. And before that, she had a divorce. Huh? So first divorce, then 3-4 years court case, fighting, and then cancer. So she come to us and I told, look, you are passing through a very critical, stressful situation. Even though, try to make the practice of equanimity and samta, balance. Don't condemn your excessively. Don't criticize. Maybe several causes are there. So don't condemn and don't criticize, because it is a kind of brain drain or energy drain. Stop it. And she stopped. And then again she started bursting into tears. And I say, don't lose your energy like this. Because try to understand the real situation. Go for the check. Means biopsy is done. So go for the surgery. And I pray, I do Mangal Path, but you stopped the criticizing and condemning that one party is good. Now you try to make equanimity and friendship with your body. She started that. Then the third stage, when operated, before operation, I gave her 3 days class. And that class is, be ready for the surgery. Green color meditation. Means less negativity. And when she went in the operation theatre, she was so happy. More balanced. And it was very beginning of the cancer. It took out, and then doctor says no need of chemo, just radiation. So for 21 days radiation, and after that she was survived nicely, looking better, not down. And after that she did again green color meditation and red color meditation. And one mantra of Acharya Sri's book, Acharya Sri का जो गीत है चैत्य पुरुष जग जाए. The last line of this गीत is very powerful because it is like a bath. Om Rang Ring Room Rong Reh Antar Mal Dhul Jaye. I told her, just sit in the position Om Rang Ring Room Rong Reh Antar Mal Dhul Jaye. In this way you clean yourself. Sit it. And then try to learn taking energy from the universe, from each and every part of the body. Sit in this. And it's a very balanced situation. So, PhD student, and when this 21 days over, you see, things are not going to stop. Suddenly she got a call. Mother and father got a severe heart attack. And suddenly she flies in another country. So you see, life is this. But she said, now I'm more balanced and more powerful. If I was my own and own, maybe I'm condemning my that in-laws and that party and binding new karma. I said, stop binding new karma. Be positive and start equanimity and samta. So this is life and this is Samyak Darshan. If there is no Samyak Darshan,
such things is not possible. People are not able to stop is this. These are the real example, very recent example. So I feel Samyak Darshan, we have to keep Samyak Darshan out of our religious book. कि अनंतानुबंधी कर्मनो बंधन ने अप्रत्याख्यान ने संयम ने कषाय. It's okay to understand, but finally if you understand Jainism, there is one if in one word, that is samta. Our body is not always in same situation. Our position is not always in the same situation. Previously I was a boss, and today my son is boss, and maybe day after tomorrow my son's son is boss. Huh? So in this situation, if you don't want to hand over these things to them, then they will ask you. And before asking, if you hand over, enjoy your different type of position. We don't want to enjoy different position. We want to stick on the same position. And this is the pitfall. This is the drawback of our life. And nobody, no president, no sant, no sadhu, nobody, because there is lot more changes. क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया. जो चेंज हो रहा है, एक्सेप्ट दैट चेंज. एंड इफ यू डोंट एक्सेप्ट, तो नटसेल में, संक्षिप्त में सम्यक दर्शन यही है कि हम उसको यूं समझ लें, जो हो रहा है, जो फ्लो के साथ हो रहा है, उसमें हम क्रिटिसाइज कंडेम करते हुए नहीं, उसको समता से देखते हुए, समता की आंख से देखते हुए हम आगे बढ़ें. जो स्थिति हमारी 10 वर्ष पहले थी वो आज नहीं है, और आने वाले 10 वर्षों के बाद हमारी डिफरेंट सिचुएशन होगी. यदि हम उसी टोन में बोले तो बच्चे हमारी बात नहीं मानेंगे. वही टोन कोई भी नहीं स्वीकार करेगा. यदि हमने उसी टोन में खाया तो हमारी बॉडी भी स्वीकार नहीं करेगी. 10 years ago जो आप खा सकते थे, आज आप नहीं खा सकते हैं. 10 years ago आप दौड़ सकते थे, वैसे आप आज नहीं दौड़ सकते हैं. तो समता का अभ्यास, सम्यक दर्शन का अभ्यास, जो अभ्यास जन्य सम्यक दर्शन है, वो ऐसा सम्यक दर्शन है कि हम बदलाव को एक्सेप्ट करते जाएं. जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को हम अपने भीतर स्वीकार करें. कोई दूसरा हमें स्वीकार न कराए, उससे पहले हम स्वीकार करें. यदि वो मेरी क्लास की लड़की यदि ऐसे झगड़ा करती, तो एक तरफ तो वो झगड़े की टेंशन, दूसरी तरफ खुद की बीमारी का टेंशन, शायद वो उससे निकल नहीं पाती. हो सकता है जो एक वीक उनको टाइम मिला था ऑपरेशन होने का, उसमें और वर्स्ट हो जाता, क्या पता स्टेज आगे बढ़ सकता था. लेकिन स्टॉप देयर. स्टॉप करना सीखो. हम जानते हैं, हम किसी भी स्विच को, मोबाइल का स्विच ऑफ करते हैं, इसका स्विच ऑफ करते हैं, इसका स्विच ऑफ करते हैं, हीटर बंद करते हैं, बहुत सारी स्विच हम ऑफ करना जानते हैं, लेकिन अपने स्विच को ऑफ और ऑन करना हम नहीं जानते. If we know this, then हमारे दुख कम हो सकते हैं, हमारा सम्यक दर्शन हो सकता है. और सम्यक दर्शन वो परिभाषाओं वाला या एकदम गहरा गहरा अनंतान बंदी क्रोध मान माया लोभ और राग द्वेष कलह अव्याख्यान 18 पाप और उसके संयोग से जो स्थिति उत्पन्न होती है, वह मिथ्या दर्शन है. और इसका अपोजिट सम्यक दर्शन है. यदि मैंने आपको ऐसे रटा दिया और आप बाहर गए और आप भूल गए, आपको याद भी नहीं रहा सम्यक दर्शन क्या है. नाउ आई थिंक यू कैन कीप इन योर माइंड सम्यक दर्शन समता, सम्यक दर्शन समता. और तभी आप इस संसार में सुखी रह सकते हैं. नहीं तो कोई भी किसी को सुखी नहीं कर सकता. अपना सुख अपने हाथ है, अपना सम्यक दर्शन अपने हाथ है. So accept the change, move with change, move with समता. और जानता कर्मो, जो भाई ने बात कही कि मैं बांध रहा हूँ, कर्म बंध रहे हैं, जब ये भान होने लगता है तो उससे भी हमारे बंधन
बंधन होगा, गाढ़ नहीं होगा। बंधन होगा, बंधन से कोई नहीं बच सकता। भगवान महावीर नहीं बच सकते थे सांसारिक अवस्था में। नोबडी कैन सेव। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ बंधन नहीं हो। दिन रात 7-8 कर्म का। Why I am saying 7-8? आयुष्य। यस, राजीव भाई ने अच्छा बताया। आयुष्य कर्म तो लाइफ में एक बार है, बट रेस्ट ऑफ द कर्मा centuries। तो 7-8 कर्मों का बंधन चालू है। उदय भाव भी चालू है। अभी कहेंगे भी एवरीबडी इज सो पीसफुल, नोबडी इज एंग्री। एंगर हो गयो? एंगर खत्म हो गया क्या? नो, इट्स इनसाइड अस। अभी सभी तो प्रवचन में सम्यक दर्शन में लगे हैं इसलिए, लेकिन कभी आपके मन की बात नहीं हुई, घर पहुंचे, जो आपने सोचा था कि घर जाऊंगा तो ये रेडी मिलेगा, वो रेडी नहीं है, तो ऊपर आ जाएगा। ओनली few seconds it will up। तो it is inside। जब तक वितरागता नहीं होती, we have क्रोध, we have मान, we have maya, we have love, even I am wearing nun's cloth, but I have anger, I have ego, I have deceit inside me। Maybe they are less, they are not so much active, or by my understanding, by my own samyak darshan, by equanimity in practice, I'm asking them, okay, love, sleep, don't active, knowingly, but sometimes they are active. They are active in me. So, samyak darshan means to understand the reality. Rago ya doso viyakam viyam kammam cha mohappabayam vayanti kammam cha jai maranas samulam। So, 2 seeds of the bandhan, rag and dves. And about these 2 situations, the final stage is samta। So it starts, but it is 10 degree, 5 degree, 20 degree, 60 degree, 100 degree. When final samta, then vitra. But we can practice equanimity। So today's lesson is finally जो हो रहा है उसको जानते हुए कर, और जो कर रहे हैं उसमें समता का अभ्यास करें। और it will not change like overnight। It is not in our hand, but we can mild. We can mild. Sometime out of 10 times we can win 5 times, 5 times not. Sometimes 6 times, 3 times, 4 times. Ratio will go, and one day we will definitely win the situation। So, Samyak Darshan is the first stage of our journey, and this will be a practical Samyak Darshan if we try to follow equanimity, Samta। And I think आपको 2 लेक्चर हुए हैं सम्यक दर्शन के, कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ खुराक मिल रही है। और 3rd भी सम्यक दर्शन पे करें तो थोड़ा सा और खुलासा हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज को हम 1 भी लेक्चर कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, पर मैं सोचती हूँ कि कम से कम सम्यक दर्शन पे 3 लेक्चर हो जाएंगे तो काफी अपन को कोई भी कभी बात चली कि सम्यक दर्शन, तो हमारी थोड़ी सी दृष्टि खुली। पूरा सम्यक दर्शन तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन एटलीस्ट हमारी दृष्टि खुली रहेगी। तो मैं चाहती हूँ कि एक फिर अगला फिर वो सम्यक दर्शन पे कर लें, ठीक है? या कोई नया सब्जेक्ट? ठीक है। क्योंकि एक ही जगह को गहरा खोदेंगे तो पानी आएगा। तो अगला लेक्चर भी सुबह की ईमेल आपको आ जाएगी। सम्यक दर्शन पार्ट 3 रहेगा संडे को। नेक्स्ट वीक। हाँ, नेक्स्ट वीक। तो जैन साहब मंगल पाठ कराना आया। फाइनल टच।
अरविंदर भाई आ गए, रेणु जी हैं, बर्मिंगम जैन समाज, जैन आश्रम से हैं। मंगल पाठ, जुड़े हुए हाथ, आंखें कोमलता से बंद, संकल्प करें पूरा दिन मंगलमय, शांतिमय, आनंदमय रहे। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पडमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किड्ढम्, अहिंसा संयमोतो, देवावितं नमं सन्ति, जस्य धम्मे सयामणो। चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिढ्यो, सन्ति सन्ति करे लोये, पत्तो गई मणोत्तरं। देवदानव गंधर्वा, जक्षरक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमं सन्ति, दुष्करं जे करन्ति तं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलभद्राद्या, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमानेक्षु, मंगलं भारमल्लक, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरु, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्, महाश्रवणोऽस्तु मंगलम्, तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुरो नाम, गुणोलख स्मरण करा, सदैव अचिन्त्य काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुरो नाम, गुणोलख स्मरण करा, सदैव अचिन्त्य Hello? Hello? Yes? Hello? Yes, this is Rajiv.